Hello friends, a very warm welcome to all of you on the YouTube channel of 𝐈𝐏𝐻𝐿𝐿. I'm Gaurav Gupta and I am one of the mentors of logical reasoning and data interpretation working with 𝐈𝐏𝐻𝐿𝐿 at PW. Now friends, I have taught almost in every national level institute since last 18 years, and I've been teaching the students who are preparing for 𝐈𝐵MAT examination, 𝐺IPMAT examination, law entrance examination, MBA entrance examination, CAT, ZAT, and many more examinations since these 18 years, and been teaching 𝐈𝐵MAT students even like from the year of inception of this particular college, or you can say that this particular program, which is integrated program in management. Now we have seen that nowadays, like in the last 1 or 2 years, we have seen a lot of IIMs starting with their IPM, integrated program in management, and some of the IIMs have also started their BMS program, right? Now, in these 18 years, like if I'll talk about my career, I have taught logical reasoning, data interpretation, these two subjects which are the most important integral part of each and every examination. Now, the story is the same for the examinations which we are targeting. Now, friends, this is the very first lecture for pre-foundation course for all the students who are preparing for all these examinations, 𝐈𝐵MAT Indore, 𝐈𝐵MAT Rohtak, or 𝐺IPMAT examination for the year 2026. Now, what do we understand by pre-foundation? So, in like a month or two, whenever we'll be launching different batches, we have already launched a batch, you all must be knowing that. But before you start your lectures in that batch, I can say that every student must be sitting at a different level. हर एक student का level of understanding, हर एक student की knowledge different होगी, right? So to bring you all on the same page, at the same level, we have conducted these pre-foundation lectures. Now in these pre-foundation lectures, like in this lecture, I'll be telling you what are the different components of logical reasoning and data interpretation section of these examinations, right? So like before you start studying, if you don't know what you will have to study for, what should be your target, कि भाई target क्या होना चाहिए, क्या चीज prepare करनी है, तो अगर ये चीज नहीं पता, then you will not be able to do a proper justice with your preparation. ठीक है, तो at least पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज prepare करनी है. We should be prepared in advance so that we'll be able to prepare well. Okay. Now, in the next few sessions, we'll be talking about the basics of logical reasoning and the basics of data interpretation, so that you will have, I would say, a head start over other students who have not attended these lectures. Also, in case your level of understanding is a little low or your confidence is not that high, you feel a little underconfident, डर लगता है इन subjects से, right? Then these classes that we are conducting here for pre-foundation, right? So these classes will be very important for all of you at the beginning of the program. Okay. Now at this stage we are 1 year away from the examination. आपको लगता है कि यार 1 year will be more than enough for the preparation. But talk to the students who have written the examination this year or last year. ठीक है, जो students 1 साल के लिए prepare कर रहे थे, 2 साल के लिए prepare कर रहे थे, if you'll talk to those students, आपको realize होगा, आपको समझ में आएगा कि 1 year or 2 years are not enough for the preparation if you will not devote enough amount of time that is required for the preparation. ठीक है, सो मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 साल एनफ नहीं है, 2 साल एनफ नहीं है, 1 साल में प्रिपरेशन नहीं हो सकती, नहीं, प्रिपरेशन 6 months में भी हो सकती है, बट फॉर दैट यू विल हैव टू डिवोट गुड अमाउंट ऑफ टाइम. बट इफ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन 12th standard, 12th में हो या 11th में हो, ओके, सो यू हैव डिफरेंट अदर एंगेजमेंट्स, बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको ऑक्यूपाई रखेंगी. So most important thing is your 12th board classes. Okay, so you have school to attend, then you have board examinations, so you will be taking breaks in between and you will not be able to devote this entire 1 year for the preparation of 𝐈𝐵MAT examination. So that is why we suggest all of you to start your preparation as early as possible.
जिससे कि 12th के बोर्ड एग्जाम्स का जो प्रेशर है उसके आने से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, एंड देन आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस यू विल हैव एनफ टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन as the syllabus of IPMAT and JIPMAT examination. ठीक है? So friends, today we are going to discuss what all are the different components of logical reasoning and data interpretation. क्या क्या topics आते हैं, and more importantly, how we can start the preparation at the very basic level, so that जब class में ये वाले topics हो रहे हैं, right? Test है, mock test series start हो गई है, then at that important phase in your life, you will not face any kind of problem while dealing with this area. Logical reasoning, data interpretation, अगर थोड़ी सी भी practice कर ली आपने, then these topics, like both these areas and the topics under these areas are very easy, right? Or you can say that they will become very easy. वो बहुत easy हो जाएंगे आपके लिए, okay? But अगर इनकी proper practice नहीं करोगे, then these topics will waste a lot of your time during preparation as well as during the examination, right? So let's begin with the first thing. So first of all, the target examinations. Now let's understand from the point of view of these examinations, what type of questions or how many questions are going to appear in your examination, right? Now if I talk about IIM Indore, right? IIM Indore, whose examination is IPMAT, Integrated Program in Management Aptitude Test, right? So IPMAT Indore के exam में you will find there are 3 sections. Now out of these 3 sections, 2 sections are of quantitative aptitude, and 1 section is for verbal ability and reading comprehension. Now out of the 2 sections of quant, one of the sections is subjective answer type questions where you will have to type in your answer. तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपका जो भी आंसर आएगा आप उसको टाइप कर दोगे, एंड जो भी आंसर आता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, इंटीजर आंसर होता है, तो आपको बस आंसर, फाइनल आंसर टाइप करना है. देन इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ क्वांट व्हिच आर ऑफ द टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है? नाउ यू विल रियलाइज दैट आफ्टर लुकिंग एट द नेम्स ऑफ दीज सेक्शंस, IPMAT इंदौर में जो सेक्शन के नाम होते हैं वहां पे लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन नाम का कोई सेक्शन नहीं है, बट एवरी ईयर यू विल फाइंड one set of 5 questions. Understand this thing, one set of 5 questions which comes from either data interpretation or logical reasoning. Okay, so in the first examination IPMAT Indore, you will find 5 questions. You will find 5 questions. Once again, okay, so IPMAT Indore, there will be 5 questions that you will find from logical reasoning or data interpretation. Now these 5 questions are related to each other. They form a particular set of questions. Okay, so let's say these 5 questions will come from the topic of distribution or arrangements or games and tournaments, or it can be any set on data interpretation, right? But all these 5 questions which we have seen over the last few years are a single set of 5 questions, right? Okay, so you will not find any particular topic coming from logical reasoning or data interpretation. So that means if you want to score, if you want to make sure that you will have to answer these 5 questions, then you will have to prepare the entire logical reasoning and data interpretation section, because पता नहीं है कौन से टॉपिक में से ये 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट? ठीक है? Now our next examination is Rohtak, IPMAT Rohtak examination. Okay, now IPMAT Rohtak पैटर्न ऑफ एग्जाम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है एवरी ईयर, अगर मैं 2019 से स्टार्ट करता हूं. ओके, सो ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड समवेयर अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ IPMAT Rohtak examination, so yes, the entire paper is divided in 3 different sections: quantitative aptitude, logical reasoning, and verbal RC, right? Out of these 3 sections, among like one section is dedicated to logical reasoning, and you will find all the questions of logical reasoning in this section. Also in IPMAT Rohtak, there is a sectional time limit.
जिपमैट सॉरी IPMAT इंदौर में भी सेक्शनल टाइम लिमिट थी, but here also you will find sectional time limit. So you will get 40 minutes to complete every section. Okay, so in these 40 minutes you will have to solve 30 to 40 questions which comes from logical reasoning. Now logical reasoning में क्या क्या टॉपिक होते हैं definitely हम देखेंगे, but here this logical reasoning is very important, right? Now similarly in JIPMAT you will find 3 different sections. The sections are the same which you find in IPMAT Rohtak examination, right? So quantitative aptitude, section number 2 is logical reasoning, data interpretation, and the third section is verbal ability, reading comprehension. All right. Now here in the section of logical reasoning and data interpretation, you will find 33 questions. There is no sectional time limit. The entire JIPMAT examination, the duration of the examination is 150 minutes. 150 minutes में आपको 100 questions solve करने होते हैं. 33 questions quant, 33 questions LRDI, and 34 questions of verbal RC. Right? So this is the entire pattern of JIPMAT with 33 questions on logical reasoning and data interpretation. Right? Now, other than these 3 examinations, there may be some other examinations that you will be preparing for. जैसे 𝐼𝐏𝐿 का BMS program के लिए aptitude test है. All right. So, if you prepare for logical reasoning and data interpretation for these 3 exams that we have just now discussed, then you can, like, you are well prepared to write any exam which will test you on logical reasoning or data interpretation. कोई भी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन आप दे सकते हो जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के ये दोनों सेक्शन होंगे. ओके, नाउ व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट? ओके, सो like we discussed, you will find 3 different type of questions. We haven't discussed this critical reasoning, we'll be talking about that. Okay, and neither do we have discussed any of the other 2, logical reasoning or data interpretation, in detail. Okay, so here you will have 3 different types of questions that may be a part of these 3 examinations that we have discussed. Okay, generally critical reasoning आपको IPMAT इंदौर में नहीं मिलेगा, but critical reasoning आपको रोहतक and JIPMAT exam में definitely मिलेगा. But what is critical reasoning? Critical reasoning होता क्या है? Or for that matter, what is logical reasoning? What all are the different topics under logical reasoning? What is data interpretation? What type of questions do we get in data interpretation? Let's have a discussion of this one by one. So starting with logical reasoning can have any of these topics. All right. So these are the different topics from which a question can come in the section of logical reasoning, right? Now, if I talk about these type of questions, I can say that these are moreover quant based reasoning. Quant means इसमें थोड़ी बहुत calculations मिलेंगी, कहीं-कहीं numbers मिलेंगे. Okay, not a lot of verbal skills. आपकी जो English की skills है, verbal ability की skills है, वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे test नहीं होंगी, right? And more of numbers, quant will be involved. Quant के topics involved नहीं होंगे, जैसे arithmetic, algebra, वो सब चीजें involved नहीं होंगी, but this is solving based. Okay, now all these topics are very easy and can be completed. Like अगर मैं ये सारे topics की बात करूं, so if you study properly for 2.5 to 3 months, you can finish each and every topic. Okay, now let's talk about each and every topic one by one, and then how to prepare for this entire section as a whole. Okay, now first of all, arrangements and distributions. Now arrangements and distribution, arrangements can be of 2 different types. It can be a linear arrangement or a non-linear or circular arrangement, right? So the questions which will come from arrangements will be like, you will be given a set of people who are sitting in a line or around a circular table with some conditions, like A is sitting to the left of B, B is the immediate neighbor of C, C sits 2 places away from D, right? So इस तरीके की आपको information given होगी, and using that information you will have to make a proper arrangement, and then on the basis of that you will have to answer 1 or more than 1 questions. Okay, so in some cases you will find कि भाई arrangements में से एक ही question आया है, so after drawing the complete arrangement you will be
answering only one question. But sometimes the questions on arrangements may come in a set of 2 or 3 questions. Okay, right? So this is about arrangements. Now this can be a linear or a circular arrangements. Linear और circular arrangements में बहुत छोटे से कुछ differences होते हैं जो हम अच्छे से क्लास में स्टडी करेंगे. ओके, नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस बहुत मजेदार होते हैं. इन द क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई गिव यू एन एग्जांपल किस तरीके से क्वेश्चन होगा. सो लेट्स से देयर आर 4 फ्रेंड्स हु लिव्स इन 4 डिफरेंट सिटीज एंड दे वर्क इन 4 डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, तो 4 फ्रेंड्स के नाम गिवन होंगे, 4 सिटीज के नाम गिवन होंगे एंड 4 कंपनीज के नाम गिवन होंगे, बट दे आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. अब आपको क्या करना है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, सिंपल सी बात. एंड मैच द फॉलोइंग कैसे करेंगे, कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसको यूज करके आप प्रॉपर एक टेबल फॉर्म करेंगे एंड देन यू विल गो टू द क्वेश्चंस एंड आंसर देम. ओके, सो दिस इज अबाउट अरेंजमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर एंड लेटर सीरीज. अगेन ये वाला टॉपिक इजी होता है बट बहुत इजीली स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट कर सकता है. ओके, अब यहां पे क्या होता है, ठीक है, विल बी टीचिंग यू ऑलमोस्ट एवरी कंसेप्ट इन द क्लास, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट आपको जो लॉजिक है वो क्लिक नहीं करता एंड यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो इसका सिंपल सा इलाज क्या है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख पाओगे एंड देन जो लॉजिक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसका जो लॉजिक है वो उतनी ही जल्दी क्लिक करेगा. ओके, सो नंबर एंड लेटर सीरीज में क्या होगा, कुछ नंबर सीरीज होंगी जो एक पर्टिकुलर लॉजिक फॉर्म कर रही होंगी, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म कर रही होंगी. सिमिलरली लेटर सीरीज हो सकती है या फिर मिसलीनियस सीरीज हो सकती है. सो इसमें कंप्लीटिंग द सीरीज, फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर और अल्फाबेट इन द सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग. एज द नेम सजेस्ट, कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है उसका कोड पता है आपको, तो सेम रूल फॉलो करके, सेम कोडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपको एक और वर्ड गिवन होगा जिसका कोड डिटरमाइन करना होगा. ठीक है, अब ये कोडिंग एंड डिकोडिंग में लॉजिक्स क्या क्या यूज हो सकते हैं. सो व्हाट दे मे डू इज दे मे गिव यू अ कंप्लीट वर्ड. ठीक है, उसके जो भी अल्फाबेट्स हैं, हर एक अल्फाबेट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक नया अल्फाबेट आ रहा है. यूजिंग लेट्स से नेक्स्ट अल्फाबेट बना दिया. सो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वर्ड ले लेता हूं, लेट्स से डस्टर. सो इफ आई से दैट डस्टर इज कोडेड एज, अब मैं कर क्या रहा हूं, डस्टर इज कोडेड एज ई वी. नाउ ई इज द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर डी, सो डी प्लस 1 इज ई, यू प्लस 1 इज वी, एस के बाद टी आता है तो यहां पे टी लिख दिया, टी के बाद यू आता है, ई के बाद एफ आता है एंड आर के बाद एस आता है. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव written the next alphabet for these respective alphabets to make its code. अब लॉजिक एक बार क्रैक कर लेंगे तो क्रैक करने के बाद अब आपको कोई भी एक वर्ड गिवन होगा. लेट्स से व्हाट विल बी द कोड फॉर मार्कर. सो आपको क्या करना है, सेम लॉजिक अप्लाई करना है एंड यू विल हैव टू डिटरमाइन द कोड ऑफ मार्कर. ठीक, सिंपल. तो अभी तो सिंपल लग रहा है लेकिन ठीक है, काफी डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं एंड वंस यू विल प्रैक्टिस most of these variety of questions you will be fine with these. Okay, next topic is direction senses, north, south, west, east, right? So direction senses, you will be given a question like a person started from his house, okay, went in the east direction for 10 kilometers, then took a right turn, went for 5 kilometers, took a left turn, went for 6 kilometers, then took another left turn, went for 20 kilometers and stopped. राइट, सो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी एंड आपको क्या करना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. अब इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है. और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, दैट इन विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग नाउ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, और विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग व्हेन ही स्टॉप्ड एट द फाइनल पॉइंट. बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास में हम करने वाले हैं, एक एक चीज को सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड रिलेशंस. ब्लड रिलेशंस, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ,
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सारे रिलेशंस को हम स्टडी करेंगे एंड विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. ओके, then clocks and calendars, questions which are based on finding the angle between the hour hand and minute hand of the clock. Like 9 o'clock पे angle कितना होता है, सबको पता है. 9 o'clock पे hour hand 9 o'clock पे होगा, right? 9 पे होगा and minute hand 12 पे होगा and इनके बीच का angle 90 degrees है. Okay, so questions related to this thing will be coming from clocks and then calendars. Like अगर आज 4th of October 2025 है, let's say random, तो 29th of January 2026 पे कौन सा डे होगा अगर आज का डे ट्यूसडे है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कैलेंडर्स में. नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब्स एंड डाइसेस. सो क्यूब्स, नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्यूब, इट्स अ ज्योमेट्रिकल फिगर क्यूब. ओके, तो क्यूब को मैंने पेंट कर दिया रेड कलर से ऑन ऑल द 6 फेसेस. देन मैंने उस पर कुछ कट्स अप्लाई कर दिए एंड छोटे छोटे पीसेस ऑब्टेन हो गए. अब ये जो छोटे पीसेस आए हैं, इनमें से कुछ पीसेस पे 1 साइड पेंटेड होगा, किसी पे 2 साइड पेंटेड होगा, किसी पे 3 साइड पेंटेड होगा, राइट? तो अब हमें काउंटिंग करनी है कि कितने पीसेस पे 1 फेस पेंटेड होगा, कितने पीसेस पे 2 फेस पेंटेड होगा एंड सो ऑन, राइट? तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड कुछ फॉर्मूला है, उनको यूज करके हम ये क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं. टॉकिंग अबाउट डाइसेस, डाइसेस जो आप घर पे खेलते हो ना, लूडो खेलते हो, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो, उसमें जो डाइस यूज होता है, ओके, तो क्वेश्चंस विल कम ऑन दोज डाइसेस एज वेल. अब बचपन से खेल रहे हो तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट? बट अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन डाइसेस. ओके, राइट? नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मशीन्स, इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस. तो यहां पे क्या होगा, कोई भी आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, ओके, कोई भी एक सेंटेंस गिवन है. हाँ, ना अगर मैं इस सेंटेंस को एक मशीन में इंसर्ट करता हूं, राइट, तो मशीन इस सेंटेंस पे कुछ प्रोसेसिंग करेगी एंड जो भी वर्ड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देगी. या फिर मैंने इनपुट में कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिया, अब मशीन उन पे नंबर्स पे प्रोसेस करेगी एंड एक आउटपुट जनरेट कर देगी सच दैट दीज नंबर्स विल बी अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो हमें यही डिटरमाइन करना है कि भाई किस ऑर्डर में अरेंज किया है. इट कैन बी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. इन केस ऑफ वर्ड्स इट कैन बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि किस ऑर्डर में अरेंज किया है एंड मेथड क्या यूज किया है उनको अरेंज करने के लिए, राइट? सो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत सिंपल टॉपिक होता है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज वेन डायग्राम्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, टीम फॉर्मेशन. Now Venn diagrams like this बचपन में किए हैं, ओके, जहां पे कुछ set of people, right, कुछ set of objects will overlap another set of objects. Okay, orders and rankings, you will have to arrange some people in a particular order. उनकी ranking given है, तो ranking from the beginning, ranking from the end क्या होगी, how many people will be there in 2 particular ranked persons, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. And then team formation will be given, let's say एक आपको क्रिकेट टीम बनानी है, so आपको 20 प्लेयर्स गिवन है, आपको 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं यूजिंग सम कंडीशंस कि भाई 7 बैट्समैन होने चाहिए, 2 विकेट कीपर होने चाहिए या 1 विकेट कीपर होना चाहिए, 4 बॉलर्स होने चाहिए, 2 ऑलराउंडर्स होने चाहिए. ठीक है, तो अभी तो मैंने एक बहुत ब्रॉड आपको एग्जांपल दिया, 20 में से 11 का टीम बनाना है, बट आपको क्या होगा, 7 पर्संस है, उनमें से 4 का टीम बनाना है विद सम restrictions that if A is selected, B cannot be selected. If C is selected, D has to be selected. इस टाइप से आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी एंड देन उन स्टेटमेंट्स को यूज करके आपको टीम फॉर्मेशन करनी होगी. ठीक है, अब सुनने में ये बहुत ही ज्यादा कोर्स लग रहा होगा बट एक्चुअल में इतना है नहीं, राइट? On every topic we'll be having a separate class of 2 hours. इनफैक्ट अरेंजमेंट्स पे डिफरेंट क्लास होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफरेंट क्लास होगा. ओके, सो विल बी हैविंग अ सेपरेट लेक्चर ऑफ 2 hours in which I'll be teaching you each and every basic about these topics, followed by a lot of questions that we'll be solving in class. And then immediately after class आपको एक डेली प्रैक्टिस पेपर का शीट मिलेगा जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे एंड उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइडेड होंगे, राइट? सो विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे एज फार एज covering up the basics and working on the practice questions of all these topics is concerned. All right, so this is logical reasoning.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। ना लॉजिकल रीजनिंग में ही वर्बल बेस्ड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्रिटिकल रीजनिंग में डाल देते हैं। ऐसा कोई आपको एग्जाम में अलग से सेक्शन नहीं मिलेगा, बट दीज क्वेश्चंस विल कम विद द क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, राइट। जनरली आईपीमैट रोहतक के एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, एंड जिपमैट में भी सिलॉजिज्म्स इन सब के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत वर्बल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, ओके, सिलॉजिज्म्स, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट assumptions, conclusions, cause and effect, right? So all these topics once again will be taught to you in each and every class separately, and again the same set of practice level questions will be given to you, okay. Now friends, moving on to the last part, that is the data interpretation. Now data interpretation is all about calculations, numbers, okay. So general format of this question कैसा होगा? So some mathematical data in the form of numbers will be given to you. For example, let's say population of a country in 5 different years: 2021, 22, 23, 24 and 25. Population of India given. Okay? अब आपको find out करना है what is the increase in population from 2021 to 2025. कितना increase हुआ है? Or you will be asked the question on percentages. What is the percentage change in the population from one year to another year, right? So first of all, some mathematical data can be given to you. अब ये जो data होगा वो किस form में हो सकता है? It can be in the form of table, bar graph, line graph और pie chart. अब इन सब के बारे में सुना होगा शायद, probably question भी solve किए होंगे past में. Okay, now we'll be talking about all these things in detail in the classroom. All right, ठीक है. So tables किस टाइप से given हो सकती हैं, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं? हमें बार ग्राफ बनाना नहीं है यार, हमें बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट्स हमें ड्रॉ नहीं करने हैं, हमें सिर्फ डेटा उठाना है उनमें से. So we should be able to read all these type of charts. Read means उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, एंड ये बहुत बहुत ईजी होता है, ठीक है. तो स्टेप नंबर 1, डेटा गिवन होगा, हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, डेटा को रीड करना आना चाहिए, वैल्यूज पिक करना आना चाहिए, ओके. सो डेटा में अगर बार ग्राफ में दिया हुआ है आपको पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट कंट्रीज, सो 2021 की पॉपुलेशन कैसे रीड करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंसिडर करके 2022 की पॉपुलेशन कैसे रीड करनी है, ऑल दीज थिंग्स विल बी लर्निंग इन द क्लासेस. बट बहुत ईजी है, ठीक है. तो इतना कोई फाइट नहीं है, आराम से आप लर्न, आराम से आप सीख जाओगे, ठीक. तो फर्स्ट थिंग इज डेटा. सेकेंड थिंग इज द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑन दिस डेटा. तो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं. जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं, इट इज अबाउट फाइंडिंग द परसेंटेजेस, ओके. द परसेंटेज ऑफ लाइक द पॉपुलेशन ऑफ 1 ईयर is what percentage of the population of second year, or what percentage more than the population of the second year, right? So involving percentages, first type of questions. Second, involving averages. So averages or ratios के ऊपर भी questions आते हैं. What is the ratio of the population of 2 countries? तो आपको simplify करना है, ratio find out करना है. What is the average population of all these 5 years? आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो परसेंटेजेस, रेशियोज एंड एवरेजेस बिकम्स द 3 वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, थिंग्स टू प्रैक्टिस फॉर, टू अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके. अब क्वेश्चंस जो भी हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दे में इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. तो सबसे पहला चैलेंज है क्वेश्चन को रीड करना. रीड करने के बाद समझना कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एंड देन जो भी पूछा हुआ है उसकी प्रॉपर एक्सप्रेशन बनाना एंड उसको सॉल्व करना. दैट्स इट. दीज आर द थिंग्स, दीज आर द challenges. I should not be using this word challenge क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं. So these are the different things that you'll have to do, okay, to do good in data interpretation. अब data interpretation you can find a 5 question का एक set in IPMAT इंदौर examination. IPMAT रोहतक में last year ही there were 6 to 7 questions on data interpretation. Similarly, JIPMAT examination, right? So in all these exams, ये जो topic है data interpretation, ये बहुत important है. And I don't know if you'll believe me right now or not, but
just pick up the question paper of last year, जिपमैट का ही पेपर उठा के देख लो, इतने easy questions हैं, आप orally उन questions को भी solve कर सकते हो if you will attend even a single class that I'll be taking for all of you. Alright, so friends, these are the different components of logical reasoning and data interpretation section that you will have to prepare for. Now, I hope that all of you must be eager to enter the classroom to start the preparation. So friends, in my next session, I'll be giving you a proper understanding of the basics of logical reasoning, in which we'll be discussing some basic concepts and we'll be solving questions of the first two topics of logical reasoning. And then in the class after that, we'll be doing the same thing with data interpretation. So I'll be showing you what do I mean when the data is given in the form of a table or bar graph or pie chart. So I'll basically introduce you with a different type of data sets, okay, and then the different type of questions that can appear to all of you. All right, so friends, I'll see you in the next class. All the very best. Have a nice time and do prepare well for these exams. Bye bye.